वाहेगुरु। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जे ਆਪਾਂ बाबा जी सिंह जी होरां दी बरसी मना रहे हैं। ते कल जदों उन्हां दी याद विच ते शुकराने वजों जो 21 अखंड पाठ साहब रखे गए ते आरंभ वेले दा हुक्मनामा साहब जो आया सी उहदे बोल सन, साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी। Yesterday when 21 when the recitation of whole Guru Granth Sahib Ji from 21 Sarups started in gratitude and in the memory of Baba Ji Singh Ji, the Hukamnama Sahib was that when the divine makes us meet a holy congregation, only then we can hear the divinely utterances. Only then. Laws of truth, everlasting laws of truth, that only in holy congregation we are blessed. हाँ जी, असीं जागदे जी सारे। Only then we are blessed to become peaceful, little humble, humility that makes us capable of hearing the divine. Humility. Without humility,
we can never listen to his utterances. And humility can never come to us without the company of the humble ones. These are the eternal laws of truth. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਲੇਮੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਕੜ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਆਕੜ, ਈਗੋ, ਹੰਕਾਰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੋ ਸਟ੍ਰੇਂਜ, ਵੈਰੀ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਲੇਮੀ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਟੈਪ ਹੈ। It's the humility. Which makes us capable of hearing his utterances. Please understand what we are celebrating. We are celebrating the blessing which was showered upon us. To be blessed with the holy congregation. ਆਪਾਂ ਕੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਤੁਮੇ ਮਿਲਾਇਓ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਪਾਏ। Maharaj Ji says nobody themselves can come to any holy congregation. It's the divine who sends him. And it's the divine who if we don't deserve, then it's the divine who takes us out of that congregation. साध संग जो तुम्हें मिलायो, तो सुनी तुम्हारी बाणी। आनंद पाया पेखथी नानक, प्रताप पुरख निर्बाणी। In the holy congregation, I became capable of hearing you, listening to you. Listening to your instructions, listening to your statements of truth. And by following your instructions, I came to recognize the grand glory of the divine who is present everywhere. Pratap Purkh. Purkh da matlab sara brahmand ji de naal bhariya hoya. ਨਿਰਬਾਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।
कोई सोहनी चीज़ अपनी अखां अगे आख लोवे ते अपनी अख उत्थे टिक जाती, क्योंकि आज़ादी नहीं है अख नूं। अख किसी चीज़ दी गुलाम है। All our senses are slaves. Our tongue is slave of taste. Our ears are slaves of music. Our eyes are slaves of beauty, of lust or beauty. These worldly eyes can never know what's beauty. He liberates us. We become free. We start flying in the open skies, and first time we taste what freedom is. संगत विच आके जदों बाणी सुनदी, अंदर ध्यान लगदा, अपनी इंद्रियां आजाद कराउंदा परमात्मा, ते आपां किसी दे गुलाम नहीं रह जाते। खुले आकाशां विच उड्डण लगदे हां, फिर पता लगता है मुक्ति की हुंदी। मुक्ति किसनूं आखदे? Unless and until our senses become liberated from their respective slaveries, we can never know what liberation is. Or it's also called nirvana. Nirvana. Pratap Purkh Nirbani. Nirvana. How beautiful was the Hukamnama. Sangat di Mehma, the glory of the holy congregation. कल एक साडी बेटी आए स्विट्जरलैंड तो, पहली बार मिले, ते उन्हां दा सवाल सी कि आ जो जगह है, इहदे बारे तुहाडी की विजन है? किस विजन नाल ये जगह बनाएंगे? असी क्या कि सिर्फ एको वजह कि उस अकाल पुरख दा हर प्राणी, भावें वो किसी भी देश दा होवे, किसी भी धर्म दा होवे, किसी भी नस्ल दा होवे, किसी भी रंग दा होवे, वो आके इत्थे आके सच विच इशनान कर सके, जिथे चाहे बैठे, ते बैठ के ध्यान ला के सच विच इशनान कर सके। बस day before yesterday, the divine sent
here a son of mine from Switzerland. I met him yesterday the first time. A very beautiful soul. And his question was, Babaji, what is your vision about this place? I said, the vision is very simple, very innocent, that anybody, regardless of any religion, country, race, color, sex, gender, that one can come here freely, sit in meditation, take this place as their own, feel relaxed, and take a bath in the pool of truth or ocean of truth. That's all. Nothing complicated, nothing. That's all. And this arose out of love for his creation. It must be. जो ये जगह हाँ जी Here nobody is interested in knowing what is your religion or what are your beliefs or anything. No. We all are his children. Isn't that? That is so beautiful in itself. What there is left to be known. Divine's child. If we can imagine. रब दा बेटा, रब दी बेटी, और की पूछना रह गया. What else there is to be known about anybody? कल आपां गल करदे सां गुरबाणी दी. साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी. उस बाणी नूं आपां खत भी उहदे प्यारां दे खत भी आखदे हां. By making us meet the holy congregation, we become capable of listening to his utterances, which are also known, or at least we call them
his love letters to us, to all humanity. Nimai sanu Nimai sanu खत सजना दे सुना निमाए सानू. Oh my mother, please read his love letters to me. निमाए सानू खत सजना दे सुना निमाए सानू खत सजना दे सुना. Keho jeha me jaje onanda. What type of is the attitude or temperament of his letters to me? मिजाज ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਖਤਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਨਾ. ਕਈ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਨਾ ਭਰੇ ਕੋਈ. ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਜਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ. What type of is the temperament or attitude of his letters? And how does their faces look? How do the eyes of his letters look? Keho jeha mejaj onanda. Keho jeha mejaj onanda. Keho jeha mejaj केहो जेहा में जाजे ओनंद.
ते नैन नक्श विके ते नैन नक्श विके ते नैन नक्श विके ते नैन नक्श ते नैन नक्श विके के हो जेहा में जाजियो नादा ते नैन नक्श विके के हो जेहा में ते नैन नक्श विके ते नैन नक्श विके निमाए सानू खत सजना दे सुना निमाए सानू अतले हाजी नैन दोस्ताने डाडे मिठड़े नीतिये their temperament, their attitude is extremely favorable and loving attitude, kind, loving attitude. And the eyes of his letters are very close, friendly, and very sweet. Eyes of his letters are very close, friendly, and very sweet. And their attitudes extremely favorable, loving, kind, forgiving, compassionate. अतले हाजी नैन दोस्ताने अंतां दे मिठड़े नीतिये अतले हाजी नैन दोस्ताने डाडे मिठड़े अतले हाजी नैन दोस्ताने
डाडे मिठड़े अतले हाजी नैन दोस्ताने डाडे मिठड़े अतले हाजी डाडे मिठड़े अतले हाजी डाडे नीति किसे विरले ने डिठड़े. Oh, my darling sister, but those eyes, rare people have seen those eyes. Rare people became capable of seeing those eyes. नीति किसे विरले ने डिठड़े नीति किसे नीति किसे विरले ने डिठड़े नीति किसे डिठड़े नीति किसे लेने डिठड़े. वाहिगुरु. And the letter which we were reading yesterday, ਤੇ ਕੱਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਖਤ ਪ੍ਰੇਮ ਪੱਤਰ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਤੇਰਾ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਮਜੀਠੜਾ ਰੱਤਾ ਮੇਰਾ ਚੋਲਾ ਸਦ ਰੰਗ ਢੋਲਾ. ਸਾਜਨ ਚੱਲੇ ਪਿਆਰਿਆ ਕਿਉਂ ਮੇਲਾ ਹੋਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵੇ ਗੰਠੜੀਏ ਮਿਲੇਗਾ ਸੋਈ. ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ. ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂਗ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ.
Maharaj Ji कहते, if you have love for him, if you have hunger, thirst for him, an intense longing for him, then he is going to make you meet him. Your responsibility, or what you have to do on your part, is become deserving to meet him, who would value him, because he is not some person. We are talking about divine. फिर कहते, आवागमन निवारिया है साचा सोई। कहते जेड़ा जिदे अंदर फिर प्यास लगदी उन्नू मिलन दी, उन्नू वो मिलाउंदा ते मरण जीवन विचों कढ लैंदा ते उन्नू दिखाउंदा है साचा सोई। उन्नू दिखाउंदा, देख इत्थे सब रब ही रब, होर कुछ है ही नहीं। यही नहीं कि उन्नू सिर्फ बुलाउंदा ही है अपने नाल, नाल ही उन्नू दिखाउंदा कि देख सब कुछ इत्थे रब ही, तू ते किते है ही नहीं सी, तू नींद विच बनिया होया सी। If he becomes merciful enough upon us that we long his union, then he makes us humble. Avagavan Nivarya. Then he makes us meet him, takes us out of the cycle of birth and death, and shows us that look, everywhere it is just God. Happy Sach, Nanak Hosi Pisach. Look, it's all God. इस चीज नू असी कहते रहने, इट्स डिफिकल्ट टू बिलीव दैट इट्स ऑल गॉड। ते जिन्ना चिर आपां नू ये गल सुनदी नहीं ते आपां नू यकीन नहीं आउंदा सतगुरु ते कि वो आखदा है ते जरूर ये सच है, उन्ना चिर आपां नहीं देख सकांगे कि सब रब है। भावें आपां शक नहीं करदे कि जो गुरु साहब कहंदे उहदे विच कोई रला भी हो सकदा, भावें शक नहीं करदे, पर बिलीव भी नहीं हुंदा, पर यकीन भी नहीं। ठीक है ना? हाँ जी, ये यकीन भी नहीं हुंदा क्योंकि आपां अजे इन्ने उच्चे नहीं हुए। Even though we do not doubt his utterances that it's all him, but still it's very difficult for us to believe until we rise to certain heights, until we cover quite a bit distance on this journey. आवागमन निवारिया है सच्चा सोई, हो मैं मार
निवारिया सीता है चोला। महाराज जी कहते संगत विच आके अपनी होम में नीवी हुंदी ते अपनी सुरती परमात्मा दे नाल सीती जान लगदी। जदों आपां उहनूं महसूस करदे हां ते उदों अपनी सुरती उहदे नाल सीती, जिस तरह कपड़ा एक कपड़ा दूजे कपड़े नाल सी देईदा। ते पर जदों आपां बाहर आ जांदे ते ओह जिहड़े तोपे सी ओह आपां तोड़ दिंदे। हाँ जी। He says, in the holy congregation we become humble and we start becoming united with the divine. हमें मार निवारिया सीता है चोला। हमें मार निवारिया सीता है चोला। हमें हमें पहला लफ्ज हमें मार निवारिया सीता है चोला। गुरबचनी फल पाया है कि अमृत बोला। गुरु दे बचन मन्ने ते उस तरह कीता। सह के अमृत बोला तो दे बोलना ने की कर दिता, मैनू अमर बना दिता, मैनू दिखा दिता कि तू ते हमेशा रहन वाला है। तू ते वो है, अकाल पुरख है तू खुद। है ही अकाल पुरख से। His utterances, I followed his utterances. And the fruit I received is that he has made me realize that I am eternal. I am eternal, the divine beyond time, who cannot die, who cannot take birth. We, the consciousness, the soul, did not take birth when we were born. Only that soul was given a robe of human body. The human body was born, not us. समझते जी? हाँ जी। शरीर जम्मिया सी, आपा नहीं जम्मे से। शरीर दी मौत हो जानी, अपनी नहीं होनी। It's the body who will die, not us. We will just leave the body. We are the eternal. How beautiful. How beautiful is the journey of spirituality. How
loving. If we understand that how fortunate I am that I have been introduced to my true self. ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਰੱਬ ਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਮੌਤ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਹਲੇਮੀਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਦਇਆ ਦਾ ਰਸਤਾ, हमदर्दियां दरस्त, जो the three pillars, किरत करनी, नाम जपना, वन छकना, that one honest, most honest living, and remain in meditative state to recognize that whom I have been calling me is the divine. And then to share my knowledge, my love, my humility, my kindness with others. How beautiful is the opportunity to be in human. ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਮਾਨਸ ਦੇ ਹੀ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਥੋੜਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ, ਫਿਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ। Only in holy congregation we come to recognize the gratefulness we should feel towards our Creator and start loving the self, not the beautiful face or features. That's not going to last. We are everlasting. Everlasting. That everlasting us should be so respected and loved. And when we do that to us, automatically that spills over to others, because others are created by Him too. ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਪਿਆਰ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜੀ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। Mind's consciousness can never love the self. It only becomes egoistic. It has no idea, no perception what is love. But the one who walk this path, who undertake this journey, they start loving their selves, and that's not ego.
That is the daughter of gratitude towards him. जो वेव महाराज जी ने चलाई इत्थे ते अपनी ड्यूटी लाई, ये किन्ने प्यारा वाली। आपां नूं वो काम करदिआं प्यार आउंदा है जिहड़ा काम आपां नूं चंगा लगे, चंगा लगे। When we do something out of love, that does not tire us. माँ बाप अपने बच्चों लिए काम करते, उन्होंने प्यारां विचों, बच्चों दे प्यार उन्होंने बच्चों नाल, वो थकते नहीं। तो जहाँ आपां वेव दे विच की है कि आपां काम करना है किसी लिए जिन्हों आपां प्यार करते हैं। सारी मनुखता अपने सके भैन भरा हैं, उन्होंने आपां प्यार करते हैं तो उन्हों की मदद करनी है। ये वेव, ये लहर की है, उन्हों मदद करनी है। जिस तरह माँ बाप मदद करते बच्चों की पढ़ाउण दी, उन्होंने सिखाउण दी, सारिया लोड़ां पूरियां करते ताकि वो बच्चे सुखी वस सकन। इसी तरह आप जो सारी मनुखता है अपने भैन भरा हैं, उन्होंने मदद करनी है कि वो सुखी हो सकन। हलेमियां विच आके, हमदर्दियां विच आके प्यारां वाले हो गए बस। As parents do labor out of love for their children, the same way we are going to work for the humanity, our brothers and sisters, out of love for them. We are going to do labor out of love, and a labor out of love is really not a labor. And what is the labor? To help them recognize that their true nature is to be humble, their true nature is to be kind, their true nature is to be loving. Please recognize this. You will become very peaceful, you will become very content, you will become very happy. कितना प्यारा अपन नूं काम बख्शिया है कि जिस वो काम करने वाला अपन नूं जिहड़ा जिंदगी दा सब तो वड्डा इनाम वो मिलना है। परमात्मा दिंदा जिंदगी दा सब तो वड्डा इनाम है सच्ची हमेशा रहने वाली खुशी। The biggest reward of human life is everlasting happiness. And when we do that, God is going to bless us with that greatest reward. How fortunate we are. आपां दो काम आपां कर रहे हैं, एक अपने आप नूं पछाणन दा
ते दूसरा दूसरे की मदद करता। मैडिटेशन करते आप इनू पछाणन दा कि कौन है की है। ते अपने आप नू पछाणन लई दुनिया की गुलामी, दुनिया अपना मन अपना मास्टर नहीं होना चाहिए कि जो मन आखे वो करिए, नहीं, आप मन के मास्टर बनना है। Two-pronged journey the divine has put us on. One is to recognize the truth, the true identity of the self. And second, to bring the most beautiful change in the lives of our brothers and sisters. ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੜੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਲੀਮੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਪਿਆਰਾਂ ਵਾਲੀ। ਮੂੰਹੀ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ, ਦਿਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਣ ਨੂੰ। I am becoming very anxious to recognize my true self. But I haven't become deserving yet. ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਗਾਉਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਦੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ। ਮੂੰਹ ਹੀ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ, ਦਿਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਣ ਨੂੰ।
chale ये चाल ना सादी ते दिल दी जो ताल है चाल the gate of my breath and the rhythm of the heartbeat. The rhythm of the heartbeat and the gate of the breath reveals the glory of your beloved, the divine. ये चाल ना सादी ते दिल दी जो चाल है ते दिल दी जो ताल ताल हुंदा जी रिदम ये चाल ना सादी ते दिल दी जो ताल है ऐ महरम तेरे सोने दी महिमा दिखाउण नू. We are talking to our soul that your beloved, the divine, the gate of the breath, the rhythm of the heart, shows something about his glory. सुनिया कद कोई चाहिदा तेरे शहर आउण नू. I want to come to you so badly. I want to come to your city, this body. I want to come to your city, but I have heard, I have been told that you have to be of certain height to go within. That you सुनिया है कद कोई चाहिदा कद is certain height, that you must be of some maturity to be allowed to go within. Because the inner world is the world of very different people. You must be mature to some degree. You must be wise to some degree. You must be humble to some degree. You must be hungry. सुनिया है कद कोई चाहिदा तेरे शहर आउण नू. सुनिया है कद कोई चाहिदा तेरे शहर आउण नू.
कोई शहर दिल ते करदा बहुत ही तैनू मिलने आउण नूं सुनिया है कद कोई चाहिदा तेरे शहर आउण नूं दिल ते करदा बहुत ही तैनू मिलने आउण नूं सुनिया है कद कोई चाहिदा तेरे शहर